हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ डायरेटिक्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द डायरेटिक्स। डायरेटिक्स और द नाइट्रोरेटिक्स आर द ड्रग्स व्हिच कॉज अ नेट लॉस ऑफ द सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। अभी यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम एंड वाटर। इससे हमें ये समझना है जब भी सोडियम का लॉस हमारी बॉडी में से होगा उसके साथ साथ वाटर का भी लॉस होगा। दैट्स वाई नाइट्रोरेटिक्स ड्रग्स आर द डायरेटिक्स एज वेल। सिंपली अगर देखा जाए तो डायरेटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर एजेंट्स होते हैं जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इट्स क्लासिफिकेशन। So before moving on to the classification, we will understand one concept, that is, diuretics or the natriuretic drugs act on a different part of the nephron and increases the urine output. इसका मतलब है डिफरेंट नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लूप ऑफ हेनले हो गया, पीसीटी, डीसीटी, सीटी। सो दीज डायरेटिक्स और द नाइट्रोरेटिक ड्रग एक्ट ऑन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पर वो रिसेप्टार्स को ब्लॉक करके उनकी एक्टिविटी शो करते। सो जो भी ड्रग डायरेटिक्स है उसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। उसको थ्री क्लासीफाई में डिवाइड किया गया है मेजरली। फर्स्ट वन इज अ हाई एफिकेसी और द लूप डायरेटिक्स। सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय हाई एफिकेसी, व्हाट इज मीन बाय हाई सीलिंग और व्हाट इज मीन बाय लूप डायरेटिक्स, because these are the term used for the same concept. So high efficacy matlab these are the highly potent drug. High ceiling means with increase in dose there is also increase in response. And loop diuretics means this act on a loop of Henle, and very specific, this act on a thick limb of the ascending loop of Henle. The drugs which come under this category are the furosemide, bumetanide, toracemide, ethacrenic acid, and marsalil. Now we'll move towards the second major class of these diuretics, that is the medium efficacy diuretics. This medium efficacy diuretics again subclassified as in thiazide and thiazide-like diuretics. उसमें अगर देखा जाए थायजाइड्स की कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आते हैं उनका सफिक्स होता है थायजाइड। सो इसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थायजाइड लाइक ड्रग्स से जिनमें थायजाइड एज सफिक्स नहीं होता है। सो नाउ विल डिस्कस द ड्रग्स विच कम अंडर द थायजाइड्स, विच इंक्लूड द क्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, बेंड्रोफ्लूमेथायाजाइड, मिथिक्लोथायाजाइड, ट्राइक्लोमिथिजाइड एंड साइक्लोथायाजाइड। और थायजाइड लाइक में आते हैं आपके क्यूनेथाजोन, मेटालाजोन, क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड, जीपामाइड एंड क्लोपामाइड। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड मेजर क्लास ऑफ द डायरेटिक्स, दैट इज द वीक और द एडजंक्टिव डायरेटिक्स। इसमें तीन सब क्लास है। सबसे पहला इसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आते हैं दो ड्रग, दैट इज द एसिडाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। इसमें दूसरा सब क्लास आता है दैट इज द पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पैरिंग का मतलब होता है पोटेशियम सेविंग। इसमें भी अगेन टू सब क्लास, दैट इज द अल्डोस्टेरॉन एंटेगोनिस्ट। उसमें दो ड्रग है हमारे, स्पाइरोनलेक्टोन एंड इप्लेरेनॉन। और दूसरा सब क्लास है इनिबिटर ऑफ द रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल। उसमें आते हैं ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइट। एंड third subclass is the osmotic diuretics, which is under the weak diuretic, that is the mannitol, isosorbide and the glycerol. अब हम डिस्कस करेंगे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूप डायरेटिक्स, और उसको हम कहते हैं हाई सीलिंग डायरेटिक्स के साथ। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनिबिशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। और ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हमारे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पर। दैट्स वाई दीज ड्रग्स which act on this loop part of the thick ascending loop part, that's why these are also known as an loop diuretics. And these drugs are the very fast acting potent one, and this having the short duration of action. अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म डिटेल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से आपका ब्लड फ्लो होता है। दिस इज ग्लोमेरुलस, यहाँ से आपका ब्लड फिल्टर आउट होगा, और जो भी फिल्ट्रेट होगा
वो आएगा दिस इन दिस द renal tubule. इसमें आएंगे everything which is a component of the blood, which all will get filtered out except three things, that is the our blood cells. Then we having the large protein molecule and some of the large macrolipid molecules. So इसमें आपके आयंस और ग्लूकोज सब कुछ फिल्टर आउट हो जाएगा. जब हमारे आयंस फिल्टर आउट होंगे और उसका यूरिन में लॉस हो सकता है, टू प्रिवेंट दिस लॉस ऑफ द essential component of our blood, our body has an reabsorption mechanism for this constituent. So to absorb the ions, we have the sodium potassium 2 chloride transporter in an ascending limb of the loop of Henle, जहाँ से आपके आयंस रीएब्जॉर्ब होते बॉडी में. और हमने देखा था कि सोडियम और हमारे वाटर का कोरिलेशन है. जहाँ पर भी सोडियम फ्लो होगा उसके साथ साथ वो वाटर को उसके साथ पुल करेगा. इसका मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अगर हमारे लूमेन में से अगर जा रहा है टुवर्ड्स द latter part of the nephron, means which will cause the more elimination of the urine or the more loss of urine or water. So we want more sodium to get loss. So to do that, we are blocking this reabsorption mechanism, that is the sodium potassium 2 chloride transporter. जब हम इसको ब्लॉक करेंगे, जो भी हमारे आयंस है वो आगे की तरफ मूव करेंगे और उसके साथ साथ वो वाटर को पुल करेंगे with these ions, and this will happen because of the osmotic gradient which is produced due to these ions. और इन आयंस के साथ साथ हमारे वाटर का भी लॉस होगा जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा. उसके पहले बिफोर दिस sodium is getting eliminated, hoard sodium is getting eliminated into the urine, there is one mechanism which happens in a latter part of the DCT. There is presence of specialized cell which is known as a principal cell, which uptake the sodium to prevent the loss of sodium, and in exchange to that they release one potassium as well as the H plus ions into the lumen, and this leads to a loss of potassium H plus ion loss into the urine, and this makes the urine acidic and body alkaline. That's why this drug leads to a side effect as an alkalosis. Also, they cause the loss of other ion like the potassium, calcium, magnesium, sodium. So, their side effect are there is decrease in levels of these constituent in our body. So, next part we are going to see are their side effect. As the loop diuretics cause loss of the ions, that is electrolyte, is causes decrease in level of the sodium into the blood, that is known as hyponatremia, decrease in level of potassium into the blood, that is hypokalemia, alkalosis that we have discussed, which happens due to the loss of H plus ions and which leads to an increase in alkali levels into our body. It also causes the loss of magnesium and calcium from the blood, which leads to an hypomagnesemia and hypocalcemia respectively. But these loop diuretics increase the level of three constituents, that is the lipid, glucose and uric acid into the blood, which leads to an hyperlipidemia, hyperglycemia and hyperuricemia. Now we'll see some of the properties of these loop diuretics. Like these loop diuretics also act as an weak carbonic anhydrase inhibitor, except the ethacrenic acid, which does not increase the bicarbonate excretion into the urine. And since the loop diuretics not alter the glomerular filtration rate, therefore these diuretics of the choice in a presence of the moderate to the severe renal failure. And if they ask specifically which is the drug of choice, that is the toracemide. The another properties of these drugs like the furosemide gives a quick relief in a low ventricular failure and pulmonary edema. Bumetanide, which is the most potent, almost 40 times potent than the furosemide. Then we have toracemide, which is the longest half-life, longest acting, and which is 3 times potent. Ethacrenic acid is a highly ototoxic
and mersallyl can cause the kidney damage. Moving on to the uses of the loop diuretics, these are used to remove the edema fluid in a renal, hepatic, and cardiac diseases. Intravenous for the prompt relief in a pulmonary edema. Hypercalcemia treatment, hypertension, then forced diuresis in poisoning and cerebral edema. These are all uses of the loop diuretics. Now in next video we'll discuss about the thiazide and related diuretics, their mechanism of action, their site and all their details in the next lecture. Thank you.